Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें आइडेंटिकल पार्टिकल्स विषय रे पढिबा जोथरे हमें बोसॉन्स आउ फर्मियंस विषय रे देखिबा सो फर्स्ट जदि आमे देखिबा स्टैटिस्टिकल मेकानिक्स एटा दुई भाग रे आमे याको क्लासिफाई करि परिबा गोटे हला क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आ गोटे हला क्वांटम स्टैटिस्टिक्स फर्दर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अगेन क्लासिफाई हेची दुईटा कैटेगरी रे गोटे हला बोस आइंस्टाइन और बीई स्टैटिस्टिक्स आ गोटे हला फर्मी डिराक और एफडी स्टैटिस्टिक्स देखो ये जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स रो कांसेप्ट एबे केमती आसिला in order to deduce the Planck's quantum theory of radiation, that is the Planck's radiation law. Bose in the year 1924 a Bose Einstein statistics ପାଇଁ କିଛିଟା fundamental assumptions ନେଲେ ओके सो एटा क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स रो बहुत किछि अलगा थिला ओके जोतरे कि अगेन तमे या विषय डिटेल पढ़ी भी थिबो क्वांटम मैकेनिक्स रे और न्यूक्लियर फिजिक्स रे जो थे कि से हार्मोनिक ऑसिलेटर कथा कंसीडरेशन को नेले सा भीतर को मु डिटेल जाउनी एई बेसिस को नहीं कि ए जो एजम्पशन से रेडिएशन लॉ को डेराइव कले तापरे सेम ईयर रे आइंस्टाइन मध्य यूटिलाइज कले प्रैक्टिकली द सेम प्रिंसिपल आउ ताकू बेस करी कि एक्सप्लेन कले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सो एई नुआ स्टैटिस्टिक्स को इन द नेम ऑफ बोस एंड आइंस्टाइन को आगला कोन बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स तार 2 वर्ष पर 1926 रे फर्मी एंड डिराक से माने ए बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को मॉडिफाई कले बाय यूजिंग द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स देखो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहूची नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कैन ऑक्युपाई द सेम एनर्जी स्टेट ओके दैट मीन्स एटा ये जो स्टैटिस्टिकल फॉर्म दुई बा ताठू बेसी फेज पॉइंट्स कथा कंसीडरेशन को नउची व्हिच कैन नॉट पॉसिबली ऑक्युपाई द सेम फेज सेल सो तांकरी नारे याकू फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स कहा जाए नाउ मूविंग फर्दर टू आवर मेन टॉपिक व्हाट आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स एक्चुअली there are three types of identical particles gote hela identical particles of any spin which are separated in the assembly and can be distinguished from each other for example the molecules of the gas which are the particles of this kind okay now ए फर्स्ट कैटेगरी टा आछि क्लासिकल बा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अंडर रे तापर सेकंड आसला आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ जीरो और इंटीग्रल स्पिन बट they cannot be distinguished or in other words they are indistinguishable from each other so these particles are bosons or Bose particles as they do not obey the Pauli exclusion principle for example your photons alpha particles etc okay tapare third category aschi identical particles of half integral spin and they are also indistinguishable they cannot be distinguished okay and these particles obey Pauli exclusion principle example है electron proton neutron okay and they are called fermions okay तापरे ये जो as I said first kind particle को हमें जदि देखिबा actually they are the classical particles obeying the classical statistics a second और third होची quantum particles obeying the quantum statistics okay so essential distinction जदि हमें देखिबा between the classical and the quantum statistics is that particle classical statistics रे होची distinguishable किंतु हमें जदि quantum statistics देखिबा they are not
distinguishable or they are indistinguishable. Okay, classical statistics रे आमे individually particles को recognize करि परिबा किंतु quantum statistics रे आमे recognize करि परिबा नाही. Okay, so ए जो distinction एबे जदि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो थे कि दुईटा आसुची गोटे हला बोस आइंस्टाइन आ गोटे फर्मी डिराक क्या भितर एबे पुनी जदि आमे डिस्टिंक्शन को बुझिबा को चेष्टा करिबा देन आमे जदि डिवाइड कर दोछु गोटे वॉल्यूम. Okay, a volume accessible to a system into a number of cells, then according to Bose-Einstein statistics, more than one particle can occupy the same cell. Into Fermi-Dirac statistics coach only one particle or go to be none can occupy the same cell. Okay, this is the basic distinction. Ebe dekhiba what is indistinguishability of identical particles. Indistinguishability mane ame बुझिबा that if the position and spin coordinates of two of the particles are interchanged, यदि interchange कर देला, then there is no physical way of measuring that a change has been made in the system. System रे असंख्य particle अछि, जे कोनोसी दुईटा particle रो position बा spin coordinate को हमें यदि interchange कर देले भी हमें जानी पारिबा नहीं system रे कौन change हला. Okay, याकू ही कहिबा हमें distinguishable indistinguishable property. Okay, now classical mechanics रे actually identical particles do not lose their individuality. Okay, and if a pair of particles is completely equivalent, even then it is possible to identify them by continuity of their trajectories, because this property enables an observer to follow each particle तारो trajectory motion ru हमें जानी परिबा. Okay, and this is due to the fact that their wave packets do not overlap and particles move in separate distinguishable continuous orbits. मन रखो continuity रहिबो classical statistics रे आउ wave packet माने overlap करि परिबे नाही, किंतु quantum mechanics रे टिके अलगा रहउची situation. कोन ना actually quantum mechanics यदि देखिबा they follow from the uncertainty principle. Okay, uncertainty principle जोटा कि कहउची जे you cannot measure the position and momentum at the same time. Okay, so due to uncertainty principle the concept of path ceases to have any meaning. So if the position of an electron is exactly known at a given instant, then its coordinates have no definite value even at the infinitely close subsequent instant. Okay, now एबे यदि localize करिबा by localizing and numbering the identical particles at some instance, then if we localize one of them at some other instant, we cannot say which of the particles has arrived at this point. Okay, so सेही कथा को ये indirectly कहला momentum जदि certainly तमे measure करूछो ताले position measure करि परिबो नाही at the same instant. आ तार उल्टा जदि position को with certainty measure करूछो ताले at the same time or instant तमे तार momentum measure करि परिबो नाही. Okay, so in quantum mechanics there is no way of keeping track of each particle separately when the wave function of two identical particles actually overlap hita hai. Okay, thus in quantum mechanics there is no possibility of separately following each of the similar particles and thereby distinguishing them. Okay, now एबे आकु बढ़िबा आमे जो ए wave function देखिला quantum mechanics रे ए wave function पुणी दुई प्रकार अछि, गोटे हला symmetric आ गोटे हला anti-symmetric. Okay, so symmetric wave function कहले बुझिबा जदि हमें interchange कर दोछु any pair of particles, then it will leave the wave function unchanged. Okay, suppose with eigenvalue +1 of the operator p, so that operator pij is operating on the wave function psi s. S subscript is for the symmetry. It will give you equal to psi s, so eigenvalue आसिला केते +1. On the other hand, गोटे wave function को हमें anti-symmetric कहबा जदि interchange करछु any pair of particles, then यारो sign कार से जो wave function रो sign change होउची, and suppose having with an eigenvalue -1, then operator pe is operating on psi a, subscript a is for anti-symmetric, is giving you minus psi a. Okay, so एठी eigenvalue यारो आसिला -1, right? अच्छा, अब देखिबा याको टिके डिटेल रे. Suppose
आमे नौचु identical particles having an integral quantum number for their intrinsic spin as described by the symmetric wave function. Now symmetric आमे जदि कहूचु ताले with respect to interchange of any pair of particle it is symmetric. Okay, so suppose amaro wave function अछि having total capital N number of suppose particles. এই ভিতরু আমি r ଆଉ s को randomly मझिरे नेला. now जदि एटा को आमे इंटरचेंज करिबा r जगह s जगह r ताले ई दुई वेव फंक्शन समान जदि हे गला ताले आमे कहिबा जे इट इज ए सिमेट्रिक वेव फंक्शन. okay, and the type of particles are known as boson as they obey the Bose-Einstein statistics. Some of the examples of these bosons are like your photons, neutral helium, okay, normal state ray with spin 0, and also there is alpha particle which is doubly charged helium nucleus having spin 0. The second category of particles with half odd integral multiple of quantum number. Okay, they are having spin half. Okay, intrinsic spin. So याको आमे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहिबा माने एबे जो r और s को आमे इंटरचेंज कर देला परे एबे जदी वेव फंक्शन आगरे उटे माइनस सिंबल आसी जाउची इट चेंजेस साइन देन याको एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहिबा. and the particles are known as fermions obeying the Fermi-Dirac statistics. Example electron, proton, neutron, muon. Okay, so एबे Schrodinger equation को जदी आमे लेखुछु for the case of two particle wave function general यार format हला h psi 12 equal to e psi 12. so it will give suppose two degenerate solution that are psi 12 psi 21 then symmetric wave function by psi s for symmetric equal to the summation of these two solution. But however antisymmetric wave function by psi a for antisymmetric it is equal to the difference between the two solution. Okay, and remember these two solution are nothing but unnormalized wave function. Okay, एबे बुझिबा statistics of identical particles. Suppose we consider a system of two non-interacting particles for which there are two states defined by phi and phi dash. Okay, ताले तीनटा distinct possibility आसी परिबो. First hela if the two particles are not identical then combined system को आमे जदि देखिबा it will have four linearly independent states which are formed by their products. Okay, so they are given by phi 1 phi 2 phi 1 phi dash 2 phi dash 1 phi 2 phi dash 1 phi dash 2. It is first case. Second case if the two particles are now identical to a class described by symmetric wave function then three states can be formed by the superposition of their product wave function. Okay, namely phi 1 phi 2 phi 1 phi dash 2 plus phi dash 1 phi 2 phi dash 1 phi dash 2. Okay, देखो एठी जेतले आमे देखिया को पाउछु दुईटा जाको रो summation हेची राइट. तापरे third category रे if the two particles are identical but now described by antisymmetric wave function then we have only one possibility जो कि as I said minus egala phi 1 phi dash 2 minus phi dash 1 phi 2. Okay, so the system of identical particles with symmetric wave function obey Bose-Einstein statistics and they are called bosons, and that having antisymmetric wave function obey Fermi-Dirac statistics and they are called the fermions. Okay, so ଏବେ basics ଯଦି ଦେଖିଦେବା ଆକୁ ଆମେ detail ତ ପଢ଼ିବା ଏ ବିଷୟରେ. Bose-Einstein statistics ର basic କହିଲା they are having identical particles and indistinguishable. Fermi-Dirac भी same कथा ही कहूची. Okay, किंतु difference कौन second point रे difference आसुची. second point कहूची जे Bose-Einstein रे particles are having integral spin or spin 0 but Fermi-Dirac कहूची they are having half integral spin. Third point कहूची applicable to the wave function of identical particles which are symmetric upon exchange of particles, but here it will be anti-symmetric upon exchange of particles.
पार्टिकल को आम बोस आइनस्टाइन स्टैटिस्टिक्स रे बोसन बोली कहबा एठी किंतु याकू फर्मियन बोली कि कहबा तापरे एटा मेन पॉइंट they do not obey Pauli exclusion principle but here fermions obey Pauli exclusion principle 6 point okay तापरे आउ गोटे पॉइंट कहूँ क्वांटम स्टेट कैन एकोमोडेट एनी नंबर ऑफ बोसॉन्स बिकॉज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये ओबे करू नहीं ओके आउ fermions case रे particles are non interacting in the ideal case okay now let us try to illustrate it for this purpose we consider a gas of only two particles let us call them small a and b now assume that each particle can be in one of the possible quantum state 1 2 and 3 okay एबे यार पॉसिबिलिटी हमें देखिबा फर्स्ट देखिबा क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स रे ओके आमे जानिछु हियर द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल एंड एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी इन एनी वन स्टेट सो आम हाथ में दुईटा पार्टिकल अच्छी स्टेट तीनटा अच्छी तो फर्स्ट है फर्स्ट स्टेट रे दुईटा जाक पार्टिकल रहीगले सेकेंड स्टेट रे दुईटा रहीगले थर्ड स्टेट रे दुईटा रहीगले एमती तीनटा पॉसिबिलिटी किंबा गोटे गोटे करिकी भी रही पारिबे ओके एमती भी आसिला ओके सो टोटल पॉसिबिलिटी हमरो 9टा आसीगला व्हिच इज नथिंग बट 3 स्क्वायर 9 possible states are possible okay for the whole gas तापरे बोस आइनस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हियर the particles are indistinguishable माने a कोण b कोण हमें जानी परिबा नहीं so we can write b equal to a ताले एबे जदि पॉसिबिलिटी देखिबा ताले a 1 2 3 दुईटा जाक रहिले ओके किंबा गोटे गोटे की रहीगला ओके a राइट so total possibility 3 plus 3 equal to 6 now thirdly Fermi Dirac statistics ये कहूची जे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करिवो माने गोटे स्टेट रे no more than one particle can be accommodated okay and also the particles are indistinguishable so हम पाखरे केवल तीनटा ही possibility रहिला okay so in this way let us designate with a symbol xi which is equal to the probability that the two particles are found in the same state divided by probability that two particles are found in different states ताले तीनटा जाक स्टैटिस्टिक्स पाई यार वैल्यू आछि 1/3 1 and 0 so maximum को जगह रहला बोस आइनस्टाइन रे okay so there is a greater tendency in case of Bose-Einstein statistics for the particles to bunch together in the same state as compared to the Maxwell-Boltzmann अब Fermi Dirac तो पूरा जीरो आसिला okay on the other hand in case of your Fermi Dirac statistics there is a greater relative tendency of particles to remain apart in different states than as in case of your classical Maxwell-Boltzmann statistics. Finally, let us have an outlook upon bosons and fermions. Similarity होची ए दुईटा जाक पार्टिकल होची indistinguishable okay किंतु differentiate केमती करिवा by means of symmetric and anti-symmetric wave function okay आ ता सहित in case of your fermions the particles will have half integral spin however in case of your boson they will have integral spin including 0 okay so system with integral spin particles obey Bose-Einstein statistics okay and they are called boson and that having half integral spin obey Fermi-Dirac statistics and they are called fermions this is the basics okay so up to this I have taken this topic of identical particles then boson and fermions from one book now you see this I have taken from another book also okay एठी भी या विषय रे भल से लिखिजी so you can read from this book also and you can make your note accordingly okay briefly निजर note एई बहिरु आ previous बहिरु देखि कि तमे तयारी करि परिबो okay Thank you.